शो करुच्ची सेक्शन शो करुच्ची ओके स्टार्ट करिया आवर दिस इज आवर सेकंड ऑफलाइन क्लास so after 55 seconds we will start ऑडियो चेक करो आसुची तो ठीक अछि so up to quantization of charge we have finished yes so till now we have discussed only one formula that is our q is equal to ne that is quantization of charge yes or no and in today's class we will discuss methods of activation of charge or methods of charging from that part we will start and along with this we will solve some numericals बुझिला नहीं तो नेक्स्ट क्लास रे हमरो थर्ड ऑफलाइन क्लास रे कूलम्स का स्टार्ट हो रेडी so recall the concept what we have already discussed recall this thing in quantization of charge the total charge on a body is an integral multiple of charge on an electron so q is equal to plus minus ne another one thing one Suvendu line we have already discussed in that line this is 0 coulomb and this is 1 coulomb this one is 2 coulomb like this minus 1 coulomb minus 2 coulomb so now say if you will proceed towards right side then it shows loss of electron or gain in electron मन अच्छे बास तो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो ना लॉस करिवो से सेती अमाउंट रे कोन जत्ते इलेक्ट्रॉन पळेबे सेही अमाउंट से पॉजिटिव चार्ज हे जिवो बुझियो ना नहीं so this side represents loss of electrons and towards left hand side it represents gain in electrons ready clear so next is our methods of activation of charge or methods of charging try to complete the first lecture properly so there are different types of methods but basically we will discuss about only three methods yes that is friction induction and conduction one is our friction then conduction next one is induction and total first lecture टा हमें friction ही पढ़ाई फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट पढ़ाई ना नहीं बस एटा फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन विषय आज क्लास रे किछि भी डिस्कशन नाही यस बट भलो पॉइंट हम जानिबा कोन दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस फ्रिक्शन पार्ट इट इज एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर्स इट इज एप्लीकेबल फॉर insulators and second thing it is not for conductors तुम कह when two suitable materials are rubbed against each other then electron from one body tries to move from one body to another body किंतु कह तो खाली मन रखबे जे कोन से दीटा सुइटेबल मटेरियल को रब कर देले फ्रिक्शन इंसुलेटर का दरकार कंडक्टर केस रे न बुझिला नहीं तो सेडाला शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट व्हाट इज इट्स एग्जांपल example is Franklin experiment thus this is about friction हेगला नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करिया पूरा टोटल आज रो 30 to 40 मिनिट्स हम पढ़िया थ्योरी आ रिमेनिंग टाइम ओनली दीटा फार्मूला रे ही न्यूमेरिकल चलिबो टोटल क्लास बुझछना नहीं बस पुनी आ रिपीट जेमि न होबो बैकफ्लो कला माने हमर सिलेबस भी पुनी सारिया पड़ियो स्टिपुलेटेड टाइम इंटरवल रे पुनी तो नेक्स्ट कम टू कंडक्शन
here transfer of charge takes place at the point of contact. At the point of contact. And second thing, a line monroco positive charge flows from higher potential to lower potential. Higher potential to lower potential. And negative charge movement padavo. Negative charge that flows from lower potential to higher potential. Flows from lower potential to higher potential. Yes. Now, with a very simple diagram, we will discuss this thing. बुझीजिव आराम रे ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ताले दीटा कंडक्टिंग मटेरियल कोन दीटा मटेरियल जदी कंडक्टर हेल्प रे हम जॉइन कर देबा ताले शेयरिंग ऑफ चार्जेस हे परिबो ताले अप टू व्हाट टाइम केते टाइम पई सेटा चार्जेस माने ट्रांसफर चली थिबो सेडाला क्वेश्चन यस एट देखो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस सेट पई होजी बिकॉज़ ऑफ द रीजन कोन पोटेंशियल डिफरेंस लोअर पोटेंशियल टू हायर टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस अछि बोली ताले पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हे जिवो ना आउ ट्रांसफर हो पारिबो ना सेडी प्रोसेस स्टॉप हो जो बुझिला बस सेडी प्रोसेस स्टॉप होबो देखा जाउ तो ठीक छै बस तो नाउ सी द डायग्राम this is our first diagram. This is first diagram. Yes. Now there are two bodies. Let us consider two identical solid spheres, or let us consider two identical spheres. Or two identical charged bodies. Two identical charged bodies. Now see, एथरे चार्ज केमते डिस्ट्रीब्यूशन अछि देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जान भेलो so what is q total equal to 0 q total is 0 एथरे चार्ज अछि कोन देखो q total is yes plus 6e q total is plus 6 बुझ पाइला नहीं बस एटाला फर्स्ट डायग्राम नाउ व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ एनी वायर हमें ता वायर रे वर्तमान इंदी कनेक्ट कर आ सेही टाइम रे मु तुम कहली एटाला सपोज ए दिस इज स्फीयर बी स्फीयर ए रु स्फीयर बी को गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही पड़ै छी कोन कहली बुझ पाइला नहीं वायर रे कनेक्ट कर देले गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही पड़ेबो कोडी स्फीयर बी को तो रिमेनिंग फिगर रे कोन रहइबो वर्तमान पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यस सेठी थिला कोन 6 पॉजिटिव आसला गोटे कोन आसला वर्तमान एठी आड हला गोटे इलेक्ट्रॉन तो नाउ टेल द चार्ज देख परजो तो बुझ परजो एठी चार्ज केते हला yes qa is equal to plus e qa is equal to plus e neutralize then एठी एटा न्यूट्रलाइज हो गला तो केते चार्ज आसीबो yes qb in this case is plus 5p बुझ आराम से बुझो बुझेला नहीं मजा लागिवो
देन बर्तमान मु कहबी आ गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है कंडक्टर देख कनेक्ट होगी अच्छी बर्तमान आई मीन्स ऑफ वायर कनेक्ट होगी अच्छी तो स्पीयर ए रु अदर गोटे इलेक्ट्रॉन रे एक्स्ट्रा आ गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गला माने बर्तमान अच्छी कौन देख सिस्टमटा या प्लस माइनस एटी प्लस एटी अच्छी प्लस माइनस तो गोटे इलेक्ट्रॉन पळेला माने गोटे इलेक्ट्रॉन बर्तमान पळेला एथर थिला कोन बर्तमान को प्लस माइनस एटी थिला प्लस 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 तो गोटे इलेक्ट्रॉन बर्तमान एठी आस्तिला बारी अगेन आ गोटे इलेक्ट्रॉन एठी आसिला काई पालो डायग्राम दीटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेची नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑफ स्फीयर ए चार्ज इज इक्वल टू प्लस 2e व्हाट इज द चार्ज ऑफ स्फीयर बी प्लस 4e जानी परछो तो पक्का बस अगेन बर्तमान आ गोटे इलेक्ट्रॉन आस कोन भाई इलेक्ट्रॉन बर्तमान तुम ट्रांसफर करछि मो माने माने करू बिकॉज़ स्टिल देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस देखो पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर द कनेक्शन स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस देयर दिस इज हायर पोटेंशियल दिस इज लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जीवो ही जीवो देन 4e this is 2e again this is higher potential electron movement कोडे lower potential to higher potential again ए प्रोसेस रे भी जोला बर्तमान तुम कहबो सर थर्ड डायग्राम ए डायग्राम रे जीवन नहीं देखिबा को पड़िबो बर्तमान ए प्रोसेस रे जीवन नहीं को तो 2e this is 4e again मु कहबी आ गोटे इलेक्ट्रॉन पळो आ गोटे इलेक्ट्रॉन पळेला माने एठी रहला केते प्लस माइनस बुझेला तो देखो प्लस माइनस एठी दिला प्लस प्लस एठी प्लस एठू आ गोटे इलेक्ट्रॉन पळेला यस तो ये आर थे कौन थी प्लस माइनस प्लस यस गोटे इलेक्ट्रॉन गला पर से हैला अच्छा एडी कनेक्शन भी दिया एबे को इलेक्ट्रॉन गला एठी आगो फर्स्ट डायग्राम आस्तिला सेकंड इलेक्ट्रॉन दिस वन इज द थर्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ट्रांसफर रेडी एबे को व्हाट इज क्यू ए डैश plus 3e what is qb dash plus 3e now tell which one is showing higher potential and which one shows lower potential difference than zero equal potential है so sharing of charges or transfer of charges stop एडी बर्तन प्रोसेस स्टॉप हबो एबे बुझ पाइलो सो क्वेश्चन तमरो पडिबो कोन भाई दीटा आइडेंटिकल स्फीयर को कांटेक्ट करला परे व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर क्वेश्चन करबे हमें दीटा अछंती स्फीयर आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ताऊ कांटेक्ट करला परे ताऊ सेपरेट सेपरेट कर दबा तारे व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज अपीयर ऑन द स्फीयर तार न्यूमेरिकल रे कोन करिया ताले सो रिमेंबर द फार्मूला इज यस फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर is equal to QA plus QB divided by 2. This is the answer. Final charge on each sphere is equal to QA plus QB divided by 2 and we can apply this formula only in one condition. What is that condition? If both spheres are identical. If both the spheres are identical. Are you getting my point? बुझ पाइल तो प्रीवियस क्लास रे पिला पचार ए जोटा पढ़ा हो एटा बिंदी क्वेश्चन आसीबो कि तो मु तमको आंसर कोन देली ए क्वेश्चन आसीबो नाही ताल तम मन रास्तु असला एते टाइम माने स्पेयर करके हम पढिले कोन भाई भाई जतले न्यूमेरिकल अप्लाई करो सिखिया दरकार कोन हो जिंसटा यस डन दिस इज अबाउट आवर कंडक्शन फिनिश्ड बुझिलो नेक्स्ट कम टू इंडक्शन स्टार्ट करिया इंडक्शन हो जोटे मैजिकल पाठ केमती देखो जो तीनटा प्रोसेस नहीं इन दिस थ्री प्रोसेस कॉमन थिंग इज अनचार्ज बॉडी गेट्स कन्वर्टेड टू चार्ज बॉडी यस बट डिफरेंस कौन एटी विथ कांटेक्ट इन दिस टू केसेस ए दुटा केस रे कौन हो विथ कांटेक्ट without contact. In induction process, without contact, an uncharged body gets converted to charged body. एटा तार खासियत तार स्पेशलिटी है सेटा बुझ पाइलो देखिए ए प्रोसेस टा पढिबे
After that we will solve numerical. बुझिलो सब? Next देखो. Induction. So what is the process of induction? It is the temporary electrification of a conductor. Temporary electrification of conductor. It is the temporary electrification of conductor. Okay. देखो तार डायग्राम. This is our uncharged body. The first diagram shows uncharged body. Yes, this is step 1. Uncharged body means same amount of positive, same amount of negative charge are there. So total charge will be 0. So total charge 0 means indicate this thing like ready? बुझिपाइल? बर्तमान से अनचार्ज बॉडी पाखु तुम गोटे चार्ज बॉडी आनिक आसब. गोटे चार्ज बॉडी को हमें आनिक आसबा. So let us consider this is our charged body. एटा से चार्ज बॉडी. को चार्ज बॉडी को आनिक आसली? Let it is negatively charged body. Yes. ए negatively charged body करिवो कोन? Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Yes. So a negative charge कहा को attract करिवो? Positive charge को. So this nearer end becomes positively charged and farther end of this body becomes negatively charged. Process ठीक अच्छे पर्यंत. बस. बर्तमान ये जोड़ी थिबा कथा सेठी अछि. In step 3 what we have to do? The farthest end एटी कोन अछि हमर positive and this side is negative. The farthest end टाको grounding करिया और earthing कर दे. This is grounding or earthing. Grounding or earthing. तो कौन हो यार? Earthing or grounding रो voltage केते? It means it shows zero potential or 0 volt. जानि जने 10 class 0 volt. अच्छा ए एंड रे के अछि रे नेगेटिव चार्जेस. तो 0 volt आउ यार जा पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल व्हिच इज हायर व्हिच इज लोअर कति दगो 0 volt is higher potential. So this point shows higher potential region and this side is lower potential. एटी अछि के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रा आदत कोन? It moves from lower to higher potential. So electron starts to move along this direction. वर्तमान इलेक्ट्रॉन कोडी पळे आसला कोडी ग्राउंड ए साइड रे चार्ज अछि. तो ए साइड रे वर्तमान तुमरो कोन करी मु शो करी देखो इन नेक्स्ट डायग्राम ग्राउंडिंग हे जी चार्ज नाही अछि. This side shows positively charged and आम एटा एक्सटर्नल जोटा आनी जे कोन चार्ज बॉडी यार भी नेम अछि सब. बी केयरफुल नेम टा पढिबा. डायग्राम क्लियर होला? ए इज जो स्टेप नंबर एटा होला स्टेप 2. This is our step 2. This one is step 3. This is step. In step 4 you have to cut this connection. ग्राउंडिंग टाउ कैंसिल करिवो. बर्तमान कोन अछि एठी चार्ज आउछि ना ग्राउंडिंग पळेला. अच्छा एठी जो ए साइड जो पॉजिटिव चार्ज अपियर हेजी बिकॉज ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज बॉडी. व्हिच चार्ज बॉडी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी. तो जदी गोटे पिलाडे कहबो सर ए नेगेटिव चार्ज पाखे अछि बोली से ताको अट्रैक्ट करी धरि रखी दी. जदी मु एटाको डिस्टेंस शिफ्ट कर देबी. When this negatively charged body is taken far away from this sphere, what will happen? All the positive charges starts to spread themselves uniformly throughout the sphere. जानि पाइलो? आ यार दबदबाटा अछि बोले एठी लागि अछन सब पाखा पाखी. So now next step कोन करबा?
बस क्लियर डायग्राम बुझ पारछो ना बुझेले डायग्राम इठी हम एटा को एमती शो करबा इठी स्टेप 5 when negatively charged body is taken far away what will happen all the positive charges starts to spread uniformly throughout the sphere so now tell this is which charged body positively charged body initially कौन नहीं थे ताकू नेगेटिव सॉरी अनचार्ज बॉडी नहीं थे न्यूट्रल नहीं थे बस so this is positively charged body आशा तुम कहबो सर याकू एटा को एक्चुअली बहिरे देखियो किछटा बहिरे बुक रे याकू इन्सुलेटिंग स्टैंड रखा हिच तो दैट ये चार्ज हला परे भी अर्थ को जंदी चार्ज न जीवो तुम एक्सप्लेनेशन पई क्लास कहि देली दिस इज आवर स्टेप 5 स्टेप नंबर 5 फिनिश्ड दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ताले वर्तमान मु कहली एडी होल प्रोसेस रे कंट्रोल के रखिला कहलो काम के कला ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी टाको ठीक ना नहीं गोटे पिलाडे वर्तमान खेलु द बॉय इज प्लेइंग आईएनजी फॉर्मेट रे अछि ना नहीं सो जे कामडा करू जी ताको हम कहबा इंड्यूसिंग चार्ज सो दिस नेम ऑफ दिस चार्ज बॉडी इज इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी दिस इज इंड्यूसिंग चार्ज and under the influence of this inducing charge the charge developed on the nearer end they are termed as induced charge बुझ परछो ताले क्वेश्चन जदि पड़िबो to convert an uncharged body to positively charged body what should be the nature of inducing charge negative charge to convert an uncharged body to negatively charged body the nature of inducing charge will be positive बुझो राजदीप जानि पाइलानी हां अनचार्ज बॉडी मु इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव नेली बोली मु पाइले एटी पॉजिटिव चार्ज बॉडी तो सेम अनचार्ज बॉडी रेटी मु इंड्यूसिंग चार्ज टा पॉजिटिव नै जीवी भाई प्रोसेस ता चलियो तापरे एठी कोन पाइबा हमें नेगेटिव चार्ज बॉडी हला कि जोटी बढ़िया पॉइंट थिबो देखिबो जोटा कि बहिरे दीटा केस नै गोटे केस बहिरे अछि ए केसटा अछि वर्तमान मते कुहो जदि मु इंड्यूसिंग चार्ज टा पॉजिटिव नै जीवी ताहले एठी कोन अपियर होबो नेगेटिव हार्डेस्ट एंड रे कोन अपियर होबो पॉजिटिव सो ए साइड रे कोन होबो पॉजिटिव तापर तमे ग्राउंडिंग करबा ग्राउंडिंग कला पर के कोडी मूव करबो को हाइडा तो एटा पॉजिटिव माने हायर पोटेंशियल दिस इज लोअर पोटेंशियल भाई इलेक्ट्रॉन मूव करबो कोडी लोअर टू हायर तार थ्रू जीवो सेठी तो कैंसिल आउट मारियो हला सो डायरेक्शन ना अप्रूव रहयो तो पिला हेटा बुझंदी कोन खाली कनेक्शन तो संग संग आरो मार तळ डाउन सेमदी नुह बुझछ ना नहीं सो ए जो लाइन टा लेखा हला देखो लेखिला बेलू कि मन रखा केते इजी होउची किछ जा पड़नी जेटा अप्लाई करा हो तुम तार सिग्निफिकेंस ता जानि परछ ठीक है क्लियर ओके नेक्स्ट जीवा देखो नेक्स्ट इंडक्शन फिनिश्ड इंडक्शन परे छोटो न्यूमेरिकल करबा केते टाइम हेलो ठीक है टाइम इंडक्शन सरलाडी पुनी कोन एटा तो क्वेश्चन इज can a body hold 4 into 10 to the power minus 19 coulomb charge तो बॉडी एति चार्ज होल्ड कर परिबो ना नहीं हाउ कैन यू जज दिस थिंग under the quantization formula we can find Ayush everything okay देखो तो given what is the value of q the value of charge is equal to 4 into 10 to the power minus 19 coulomb and we know q is equal to ne so what is the value of n q divided by e so q value is 4 into 10 to the power minus 19 divided by e value 1.6 into 10 to the power minus 19 so after the cancellation 4 by 1.6 that means 40 by 16 that 1.16 by 10 40 by 16 केते हो हां 2.5
तो n value fraction आसला नहीं, so this is a fraction, এটা ଗୋଟେ fraction and n value ମୁଁ କହିଛି fraction ହବନି, integer ହବ ହେଲା, so not possible, answer is not possible। ଏବେ ବୁଝିଲ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବ? how many number of electrons constitute 1 coulomb charge? नंबर कौन थिला को काई डाटा इनसफिशिएंट, भाबो कि डाटा इनसफिशिएंट केतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसले गोटे कूलम चार्ज हबो? 1 मार्क क्वेश्चन पे आसुनी देखो सेकंड क्लास 0.625 into 10 to the power 19 or that is called 6.25 into 10 to the power 18 ला and कहदिली 1 by 1.6 ର वैल्यू केते 0.625 न्यूमेरिकल दरकार हो सेटा। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट को, तो आज रो थ्योरी शेष, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, एक्टिवेशन ऑफ चार्ज फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू फ्रॉम व्हाट कूलम्स लॉ, डायरेक्ट कूलम्स लॉ स्टार्ट हो हैला। सो वेक्टर फैक्टर सब पढ़ो ठीक से स्टार्टिंग रू जा जिन पढ़ाई दिला प्रीवियस ईयर बुझी देखो। तो क्वेश्चन करियो वर्तमान the question is how many megacoulombs of positive or negative charge are present in 2.0 moles of neutral hydrogen H2 gas? बुझेला देखो केन स्टेप बाय स्टेप हम करू छी। मोल जानि छ 1 मोल मींस व्हाट H2, H2 गोटे मॉलिक्यूल यस, तो 1 मोल that is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecules, number of molecules. Clear? Ready? So that means which implies 2 moles is equal to rounding ने जाओ 6 ने जाओ, तो 2 into 6 into 10 to the power 23 that is equal to 12 into 10 to the power 23 number of molecules. अरे क्लियर? इवन कौन देजी हाइड्रोजन गैस H2, तो गोटे H2 मॉलिक्यूल कथा आगे डिसाइड करो। इन 1 H2 मॉलिक्यूल, इन 1 H2 मॉलिक्यूल 2 electrons are present, 2 protons are present। जानि तो हाइड्रोजन रे गोटे इलेक्ट्रॉन थाए, सो H2 डबल H अछि, सो दीटा ना क्लियर होलानी। तो गोटे मॉलिक्यूल रे केतरा अछि दीटा इलेक्ट्रॉन, केतरा मॉलिक्यूल्स हमर अछि, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कौन बाहर कर परिबा हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाइबा ना नहीं, हां। सो इन 1 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो 10 total number of electrons in 12 into 10 to the power 23 number of molecules, what will be the value? That is equal to yes 2 into 12 into 10 to the power 23, the answer is 24 into 10 to the power 23। this is what number of electrons, number of electrons को कोथरे लिखा जाय रे n, आम रिप्रेजेंटेशन हम तब n लिखु। तो से पचार हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, भाई से चार्ज वैल्यू पचार को यूनिट रे मेगा कूलम, किंतु आमे बाहर करिया कोथे फास्ट कूलम, तापर आमे कन्वर्ट करिया मेगा कूलम। क्लियर? तो n वैल्यू डिटेक्ट हो गला, बुझि पारछो तो ना बुझिलानी बस। तो व्हाट इज q टोटल, तो q टोटल इज इक्वल्स टू n into e, तो n वैल्यू इज 24 into 10 to the power 23, e value 1.6 10 to the power minus 19 केते आछि 10 to the power 4 into केते आसिला, check it solve करी को न check it।
38.4 into 10 to the power 4. This is this much coulomb. ठीक ना नहीं? मेगा कूलम रे पचारछि मेगा मींस मेगा रो मीनिंग कोन 10 टू द पावर 6 अछि केते 4 केमती कन्वर्ट करबी इनटू 10 टू द 2 दरकार ना नहीं तो बा सेति तो करिया पड़िबो तो 38.4 into 10 to the power 4 इति कूलम तबे इनटू करो 10 to the power 2 into 10 to the power 2 divided by 10 to the power 2 माने 100 so this will be 0.384 into 10 to the power 6 coulomb and instead of this 10 to the power 6 we can write mega coulomb. This is the answer. Clear? Ready? नहीं किसी मोल कॉन्सेप्ट किसी बेसिक किसी हायर कॉन्सेप्ट पढ़ुनी मोल रो किसी हायर कॉन्सेप्ट एडी पढ़ुनी ठीक है कन्वर्सन बुझिलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करिया कंडक्शन थ्योरी बुझि तो कंडक्शन इंडक्शन फ्रिक्शन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट प्रीवियस मन अछि ना नहीं को दी जन साइंटिस्ट के कथा कहितली टाइप्स ऑफ चार्ज रे कहि परिबो कोन कोन चार्ल्स डुफे कोन कहू भूल कली किछि चार्ल्स डुफे कोन कहितले हाँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस अवेलेबल इन नेचर खाली नेमिंग के करती बेंजामिन फ्रैंकलिन नेक्स्ट इजी क्वेश्चन करो को स्टेप कौन फॉलो करिया को एबे तो नुआ नुआ न्यूमेरिकल चली ओके अपेंडेड हे गला पर हाथ स्पीड आसीबो देखो ए पॉलीथिन पीस rubbed with wool is found to have negative charge of 3 into 10 to the minus 7 coulomb so given q is equal to negative charge minus 3 into 10 to the power minus 7 coulomb so first bit is asking estimate the number of electrons transferred भाई ये तो कोई परिबा ना अरे गोटे बॉडी नेगेटिव चार्ज है केमिति खराब जिनस रिसीव कले तुम तो खराब पिला हो ना बुझ ना नहीं तुम डिमांड मार्केट रे बढ़ियो केमिति एटा जाना दरकार तो से नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर जी बोली से नेगेटिव चार्ज हो जाई नेगेटिवली चार्ज बॉडी so we know q is equal to ne so number of electrons gained n is equal to that is q by so that is minus 3 into 10 to the power minus 7 divided by what is e value 80 minus 1.6 n so that positive value so minus 1.6 into 10 to the power minus ठीक अछि बस तो कोन करिबा ऊपर केते आसला माइनस 1 कैंसिल हैला या को केते नै जिबा कहलो देखा 1.5 नियरली नै जाओ माने 15 by 10 माने 30 by 15 2 nearly equal to this is nearly equal to 2 into 10 to the power 19 minus 7 yeah 10 to the power 12 number of electrons gained nearly अरे बुझछ ना नहीं हां 1.87 तो प्रीवियस ईयर पढ़ाई दिला 1.8 करो राउंडिंग रे यस डेसिमल पर से कोन अछि ग्रेटर देन 5 माने अछि यूनिट डायमेंशन सब लागिवो भल से अरे अकाउंटेड हे जिवो तमरी परिया पिला भी मन रखछ ना बहुत सारा जिंस को तमई मन रखिबो तो 2 into 10 to the 12 number of electrons gained by this body then is there a transfer of mass from wool to polythene एटा तो पचार केतरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जंद्री भाई एतिक तो माना नहीं अरे भाई गोटे इलेक्ट्रॉन रो ट्रांसफर अछि ना नहीं को ए सॉरी गोटे इलेक्ट्रॉन रो मास अछि ना नहीं केते 9.1 into 10 to the minus 31 खाली आईसीसी बिलंग ठिया करी भड़ भड़ कहबे सतरे तांकर पब्लिकेशन ता 7 क्लास उ से आही जाई माने अकाउंटेड हेथरे डाटा माने मन रखिबारे के सी ए तम चक्कर से माने नेगेटिव चार्ज हो जाउछन ना आन
गोटे गोटे बड़ गोटे स्टोरी अच्छी गोटे ए रुह गोटे कटोरा रे आसो कि कह गोटे कटोरा शुण ए 15टा टमाटो अच्छी पूरा माने कौन देख लो पूरा पचा टमाटो से दीटा भल टमाटो आसिकी एंट्री हेले रखिल किंतु स्मेल कौन हम होल स्मेल माने पचा गंध आसो ही आसो आउ कह से ना कौन कौन भाई नो नो साइमल्टेनियसली गोटे सॉफ्टवेयर रे दीटा जिन चलो तो फोन कर स्टे कराई ओके दैट फेलो इज नाउ वाचिंग एवरीथिंग yes she is very conscious and serious also yes देखो bit b is there a transfer of mass from wool to polythene आंसर कौन लिखिबो yes बुझिला गोटे इलेक्ट्रॉन मास केते me सपोज तले केतरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड n me बुझिला तो m ट्रांसफर्ड m टोटल ट्रांसफर्ड that is equal to n into me n value 2 into 10 to the power 12 9.1 into 10 to the power minus 31 yes then nearly 18.2 into 10 to the power minus 19 kg yes this is the answer बुझेला सो मास टा बहुत कम हो अधिका हो से तुम मतलब ना भाई मास ट्रांसफर होइए यस केते दिस इज द आंसर रेडी बुझेला अच्छा कंडक्शन क्वेश्चन करिया गोटे तापर पुनी ए पार्ट को आसीबो पुनी ए टाइप रो क्वेश्चन कर देले हैंग हे जो मुंड कंडक्शन क्वेश्चन देखा भल लागियो So three identical metal spheres A, B, C, where they have charges minus 4 coulomb, 2 coulomb, 0 coulomb respectively. देखो A, B, C. This one is minus 4 coulomb, 2 coulomb, 0 coulomb. Then if C is initially touched first to A, ये कार कांटेक्ट आसले बे ए एंड सी कांटेक्ट को आसले देखो ए एंड सी कांटेक्ट को आसले ए सी कोन हबो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल देखा गला पोटेंशियल डिफरेंस ट्रांसफर ऑफ चार्जेस वगैरह वगैरह तो व्हाट इज द नेट चार्जेस अवेलेबल ऑन स्फीयर नाउ द आंसर विल बी अरे ए और सी कांटेक्ट को आसले सो -4 + 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज -2 यस पुनी जले माने सेपरेट हे जिवे ना this is your A, this is your C, -2 coulomb. Ready? Then बचार जी कौन? If C is initially tossed first to A and then to B, बर्तमान डिटा चला पर C ऐसी कास्ट कनेक्ट हो जाए, B से तो पुनी कनेक्ट हो. So now एटा वाला C, एटी असला B. C रो चार्ज केते? -2 coulomb. B चार्ज केते? 2 coulomb. पचारा फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर तापर सेपरेट करो कांटेक्ट को आसला माने इंडिविजुअल चार्ज केते होबो -2 + 2 डिवाइड बाय 2 केते आसला 0 सो व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन सी 0 coulomb व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन बी दैट इज आल्सो 0 coulomb एंड व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन ए एटा मन रखियो तो एगुडा को हमर होला फाइनल आंसर कोन -4 coulomb के कहला फुल रॉन्ग आंसर अरे बर्तमान कांटेक्ट को पळे आसिला दिस इज वन फाइनल आंसर ए रो चार्ज दिस इज द चार्ज ऑफ सी एटा ला तमरो सी रो चार्ज बुझलो नहीं नेक्स्ट दिस वन इज चार्ज ऑन बी दिस इज द फाइनल आंसर होला दिबो कंडक्शन क्वेश्चन ओराली कर दे जाजिबो कैलकुलेशन दरकार ना बेसी किंतु ठीक से लाइन को पढ़िया दरकार इजी लागला देखो तुम जो वैल्यू दे नथिबो बस क्वेश्चन को ठीक से बुझियार अछि ये कास तो कांटेक्ट को आसिला
तापर डिटाच होला से कास्ट कले एगुड़ा खाली जज करदेले रेडी ठीक अच्छे क्वेश्चन बुझेला नेक्स्ट देखो जे न्यूमेरिकल न कला माने न्यूमेरिकल कले बोरिंग लागिवो क्या बोरिंग लगे बोरिंग ताकू लगे जब तुम थ्योरीटा टे बुझी नथिबो ना नहीं कैलकुलेशन करिया डरुथबो ताकू खराब लागिवो किंतु हिट कर कले हबो को क्वेश्चन कले लास्ट क्वेश्चन कले तापर नेक्स्ट कोडा करबा ए क्वेश्चन करबा two identical metal spheres having charge 2 coulomb and 4 coulomb respectively if they are देखो आइडेंटिकल वर्ड लगा है तो जब आइडेंटिकल वर्ड न लिखा है फर्मुला पकेबनी तो तुम पचारलनी आइडेंटिकल जब नथिबो स्फीयर दिटा कटाट को आसिला ट्रांसफर होबो ना नहीं चार्ज होबो ना नहीं अब होबो तो फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर केते होबो ताले फॉर्मूलाटा पड़िबो हला हां सेटा पड़िबा एबे सेटा आसीनी एबे आइडेंटिकल ले चालू डोर लॉक अछि हां एक्साइटेड हो जाइए हाय प्रिय किछ कहबो if you want to say something please come to the dais okay India wants to know okay India wants to listen aso हाँ बस बस ये अरसेल मु हिंदी रे पढ़ेबी जे प्रॉब्लम कोन बर्तन ऑफलाइन क्लास चली जले पूरा कंप्लीट रिकॉर्डिंग बजिबो ना टॉपिक वाइज सेडी हिंदी इंग्लिश बात बुझले गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग एक्स कोन एक्सीलेंट ट्यूटोरियल वीडियो हां ए बहुत छोटो मते प्रेस मु सुनी सुनी आसली एरा दरकार नै कोन कहबो को हां बैक माने वेलकम बैक इज नाही ते देखियो देखियो न देखिल नाही जा पढिया सम ए कथाटा सुनो प्रॉब्लम कोन समस्त यदि कहबे मु बस ड्राइवर हेबी ताले कंडक्टर हबो किए दैट इज द क्वेश्चन मार्क हां ए नेक्स्ट देखो हाउ क्वेश्चन के सॉल्व करलनी ना एटा करिवनी टू आइडेंटिकल स्फीयर्स लाइक नाउ सी two identical spheres having charge 2 coulomb and 4 coulomb respectively this is suppose a sphere B don't gossip if they are brought in contact now they are brought in contact what is the final charge on each sphere 2 plus 4 divided by 2 that is 3 so after detach अरे detachment पर each रो charge केते 3 coulomb 3 coulomb अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन गोटे भल ट्रिक तुम कहली दो ये आंसर टा ठीक अच्छी भूल अच्छी जज केमती कर कहल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जान टोटाल चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व भाई ये कंट्राक्ट को आसुँच तो अदर तो चार्ज बढ़ी किसी आसन ना सो बिफोर द प्रोसेस व्हाट इज द टोटाल चार्ज ऑफ सिस्टम -4 +2 +0 केते -2 आफ्टर देखो ये -2 +0 +0 -2 चेक ओके रीवेरीफाइड अरे सॉरी वेरीफाइड में रीवेरीफाइड नहीं नेटा केते हो को 3 + 3 6 4 + 2 6 coulomb so this is your q a dash equal to 3 coulomb q b dash is equal to 3 coulomb now tell hey हेगला ना नहीं तो calculate the final charge on each sphere finished then number of electron transport एट तो फसी जीवो को केमती कराबो what is the number of electron transport कौन अरे स्पीयर ए केते थिला चार्ज 2 coulomb स्पीयर ए रो चार्ज फाइनली केते हला 3 coulomb तो एडी कोन हला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना गेन इन इलेक्ट्रॉन हे सास एटा हला बहादुरी जदी थ्योरी रिकॉल कर पाले मजा लागिवो भाई लाइन मन पका सुभेंदु लाइन कोन को आइजी 2 रु 3 एडु आछो लॉस अरे गजो ये जत्ती की पॉजिटिव अछि आहुरी पॉजिटिव हो जाइछ बुझला ना आध्यात्मिकता बढ़ी जाइछ बुझला नहीं
हाँ आगु घर भितर मुंडिया मारुला बर्तमान रास्तार पूरा मुंडिया मारू तो बेसी पॉजिटिव अच्छी भल जिनस ना तो लॉस खराब जिनस त्याग होता देख लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन अदर साइड को कौन करिवे हमें 4 कूलम टू 3 कूलम लाइन रो कुआडे जाउछ ताले 4 कूलम 3 कूलम टुवर्ड्स लेफ्ट कौन है लेडी बुझ गोटे बॉडी जतिटा इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो अदर बॉडी सेतिटा गेन करिवो टू सैटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी कैंट क्रिएट द चार्ज बुझला चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बुझिस ना नहीं तो कथा तो बर्तमान मत एति तो कह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पचार भाई ये कौन है जेकोसी गोटा को देख हो आंसर ये जीटा इलेक्ट्रॉन लॉस कर बी कौन कर इलेक्ट्रॉन गेन कर एका तो नंबरटा ना ये 2 कूलम थिला बर्तमान है केते 3 कूलम हो गला तो कौन कह केते अमाउंट से पॉजिटिव है 1 कूलम तो ये चार्ज केते एक्स्ट्रा है 1 बुझ पारछ ना नहीं या चार्ज जहाँ थिला बर्तमान केते एडिशनल चार्ज पळे आसी बाबू 1 कूलम तो एक्स्ट्रा चार्ज टा केते और प्योर ए एक्स्ट्रा चार्ज is equal to 1 coulomb. So if Q is equal to 1 coulomb, then we can say what is the number of electron transport? N is equal to Q by E. Yes, 1 by 1.6 10 to the minus 19. That will be equal to 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons. Yes, gets transferred. Done. एतिटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेले मन नहीं किन बाहर कराला बुझी होजी सिंपल न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नेले हे बिजो को कोडा बुझिलेन वाटर 2 मिनिट्स वाटर ब्रेक कोन हाउ पानी पी दे दियो हां स्टार्ट करियो नेक्स्ट फिनिश्ड ए 39 Let's solve this question. What is the total charge on 25 kg of electrons? Now you come to the dash and please solve this. Asa. Oh. देखो 25 kg of electron रो कतो कोन पचार छी what is the total charge on 25 kg of electrons. Now see this is suppose 25 kg. Yes, this is suppose 25 kg. कहा को नहीं 25 kg है या भीतर कोन अछि सब these are the electrons, these are electrons and mass of one electron is me. Let us think that mass of each electron kete me and how many number of electrons are available inside this volume. Suppose total number is what
total number of electrons that is equal to n. अरे गोटे इलेक्ट्रॉन मास है me and number of electrons is n. So what is the total mass? आसबनी total mass is equal to n into me. ठीक ना नहीं? तो total mass is equal to n me. Clear? But according to question, n me is equals to 25. So what is the value of n? 25 divided by me. So 25 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31. What is the answer? 25 by 9. Solve it. Battery कोई परिबनी calculation टा. ठीक है तो yes 2.6 10 to the power 31 number of electrons. Done. ହେଲା କିଛି ନାହିଁ रे सिंपल क्वेश्चन ଟା 25 kg electrons रे केतरा कोन व्हाट इज द टोटल चार्ज सॉरी द आंसर भूल अछि बर्तन दिस इज नॉट द आंसर दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज द टोटल चार्ज इक्वल टू q इज इक्वल टू ne तो q टोटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इच तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते 2.6 10 to the power 31 into electron 1.6 into 10 to the power minus 19. What is the value? Tell. Check it and tell. 4 point. So 4.16 or 4.1 into 10 to the power 12 coulomb. Answer. बुझिल या को अदरवाइज जदि ऑप्शन वाला क्वेश्चन थिबो एथरे या को आउ केमति वे रे लिखिबो जानि छ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो वैल्यू केते 10 टू द माइनस 6 सॉरी एटा तो अछि आ नहीं ठीक है 4.1 into 10 to the 12 एति त क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कोडा करिया Now see, this is one of the finest question. छोटो क्वेश्चन तो सॉल्व करो. क्वेश्चन जानी परछो तो केम सॉल्व होबो. कोन हला? A 100 milligram body was initially neutral. Then after it underwent a process and acquired minus 2 coulomb charge. Calculate percentage change in mass of body. So what is the meaning of percentage change in mass? Percentage change in mass. Percentage किन कर जाए change by original into 100 तो change in mass divided by original mass into 100%. So now tell what is the value of original mass? आसबनी from the question what is the value of original mass 100 milligram yes so original mass is given that is equal to 100 milligram now convert it into SI unit 100 means 10 to the power 2 milli value 10 to the power minus 3 gram means 10 to the power minus 3 kg that is equal to how much 10 to the power minus 4 kg original mass clear बुझला ना बुझलनी 1 ग्राम डैश केजी भाई एटा बतेबी तो व्हाट इज द चेंज इन मास कहि बेरो चेंज इन मास टा केन जारिबो सेटा होजी बहादुरी पाठटा बुझो इनिशियली बॉडी कोन थिला न्यूट्रल तापर कोन हे गला 2 कूलम हे गला -2 कूलम हे मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करछि तले केते टा इलेक्ट्रॉन गेन करछि आ बाहर करो तो
सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कला सो गोटे इलेक्ट्रॉन मास केते me टोटल मास केते n me बाहर जीवो दिस इज द चेंज इन मास अबे मोर सपोज मु कहबी मास मोर 50 kg सपोज तापर मु कोन कली गोटे पत्थरटा धरली ता मास हला 20 kg पत्थरटा आनली 20 kg रो पत्थरटा बर्तन मु कोन मशीन रे कोन शो करिवो 70 kg तो व्हाट इज द चेंज इन मास 70 माइनस 50 केते आसला 20 ताले मु जेति की एक्स्ट्रा मास टा आनिली सेइटा ही होची चेंज इन मास यस तो बॉडी कौन थिला 0 कूलम कन्वर्ट हो गला -2 कूलम तो इलेक्ट्रॉन कौन कला से गेन कला बस इलेक्ट्रॉन से गेन करिस रे बापा इलेक्ट्रॉन गेन करिस ताले व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन तो q इज इक्वल टू हाउ मच -2 कूलम n इज इक्वल टू q by e तो आंसर विल बी -2 डिवाइडेड बाय -1.6 10 टू द पावर -19 बारंबार कही केतले मु 1.6 पकोज केतले -1.6 पको डिफरेंस कोन एन टा मु पॉजिटिवली बाहर कर बास पॉजिटिव नंबर बार माइनस माइनस कैंसिल हला एबे आंसर कहला बा केते हो डायरेक्ट अबे गज 2 into एडी केते लिखा है 1 by 1.6 द आंसर इज 0.625 0.625 अच्छा एते काम कोन करे दरकार जे What is the value of this thing? 6.25 into 10 to the power 18. Yes? हबनी एकाटा ना तो आंसर केते आसिला केते 12.5 into 10 to the power 18. This is the number of electrons gained. चलो व्यवहार करि परिबा what is the change in mass हबनी बुझ पाइलो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते मु गेन करली जानलो तो केते एजी तो एती गेन करियर मो चार्ज केते हला 0 कूलम थिला मोर हला केते -2 कूलम तो व्हाट इज द चेंज इन मास नाउ वी कैन फाइंड चेंज इन मास इज इक्वल टू यस nme number of electrons is equal to 12.5 into 10 to the power 18 mass of each electron 9.1 calculate immediately 10 to the minus 31 the answer is kete 113.7 into 10 to the power minus 13 10 to the minus 13 clear ठीक नहीं की हाँ हाँ ताले कौन बुझिला तमे कौन बुझिला ताले ओरिजिनल कौन थिला मु तुम कौन कहली मोर ओरिजिनल मास सपोज थिला 50 हला मु 20 केजी रो पत्थर टा आनी धरिली तो टोटल मास केते मोर बारला 70 ताले व्हाट इज द चेंज इन मास 70 minus 50 20 हे 20 के की भाई जति की मोर जहा थिला मास मु एक्स्ट्रा जति की आइले सेइटा होची चेंज इन मास एबे बुझिलो बस तो मु एक्स्ट्रा एति किटा इलेक्ट्रॉन गेन कली ता भाई मो मास केते इंक्रीज हला हाई केजी मो मास ता एति तो दिस इज द चेंज इन मास आर यू गेटिंग माय पॉइंट so now percentage change in mass we can calculate easily so percentage change in mass the answer is 113.7 into 10 to the power minus 13 divided by original mass is 10 to the power minus 4 into 10 to the power 2 100 means 10 to the power 2 what is that answer 113.7 into 10 to the power minus 7 क्लियर बुझी पाइलो ना मुझे चेंज इन मास ता तो पचार दो तमे जानिया चेष्टा करो ठीक से व्हाट इज द चेंज इन मास तो मो लाइव क्लास रे हला विजयानंद गोटे पिलाटा अछि से मेसेज कोन कर सर फेवरेट स्टूडेंट को भूली गले लिटरली निमापड़ा डीएव रे दूसरा नहीं ताल स्कूल को तंग करके रखिला विजयानंद
सी हूँ गोटे पिला सी हूँ सिंगल पिला ना ना सतरे मु विजयानंद सतरे मिस कर सतरे विजयानंद मिस कर कौन मोर कौन सी गोटे क्लास रे से पिला मते डिस्टर्ब कर बुझला नहीं किंतु एई पॉइंट पाई सब टीचर मते रागले जे मु विजयानंद को सपोर्ट करूची बट दैट वाज नॉट माय इंटेंशन मु ताको बाडाएबी अदर क्लास रे जतले पनिशमेंट देथिबे ना मु ए बाटे जाउची डोडा बाटे देई पळेबी ताको काई डिस्टर्ब हो तो मैडम कि सर पनिशमेंट देइछन किंतु मु देखो मो क्लास रे गोटे पिलाटे डिस्टर्ब करूनी मु मीटिंग रे मु ता ना कोन भाई कहबी मते डिस्टर्ब करजी बोली बुझछ ना नहीं એટલે ସବୁ ଦ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ତା ନା କହୁଥିବେ କି ଯାହା ବି ହଉଥିବ ମୁଁ କହିବିନି ଏଠି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଟିମ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ହେଲି ଅପୋନେଣ୍ଟ ହେଲି ନା ନାଇଁ କୁହ ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ଲିଟରାଲି ସେ ପିଲା ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେନି ପୁଣି ଆସିକି କୋଉଠି ବସିବ ଫାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ରେ ବସିବ ତ ଠିକ ଅଛି बालकृष्ण अच्छी बालकृष्ण कौटी पढ़ुची विजयानंद और जाई हो विजयानंद बहुत दिन पर विजयानंद क्लास सरला पर मते कॉल करो हला सब सिस्टम चेंज हो जाई से पढ़ुची बर्तमान कोडी जान नहीं पोखरी बुटे भी अभी वन ऑफ द माने कोन देखलो पूरा जिदबाद पिलाटी बहुत जिद पिलाटी आगर गोटे एसोसिएशन थिला स्कूल रे बुझलो जे टारगेट न जदी पढ़े दबनी टीचर टाक माने पढ़े दबो नहीं जहां भी हे जाऊ अरे हाँ आज कॉल करियो मु उठेबी हैला ठीक अछि हौ जाई हो माइंड टाउ रिफ्रेश कर देला के विजयानंद बुझला नहीं हौ ओके नेक्स्ट कम टू आवर क्वेश्चन नंबर तो देनी देखो यस यस नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन हु कैन टेल द आंसर मैं विश्वास रो क्लास पर 50 टका देबी 50 रुपीस कैश प्राइस हाँ भाई टाइम लिमिट दिया है 1 मिनिट भीतर तमे चलाई करियो यस यस विद इन 1 मिनिट 50 रुपीस डोंट आर्ग्यू लाइक दिस ओके बिहेव लाइक ए ब्रेव गर्ल तमे कहो पढ़ियारे 1 मिनिट पड़ेगा विजयानंद लिखला मु इग्नोर करछि किंतु मु देखो मेसेज ता देखि नथिले हो ना नहीं हां हां लास्ट टा केते ए देखो कोन पचारि छी ए तमरो फोकस ता एडी तम फोकस ता ऊपर रहउनी एडी हला सेटा हला प्रॉब्लम पार्शियली से पळै दिला छडा हला के हैं 25 टका पाइबो हैं देखो हो जाऊ दिया बताले हो देखो तुम मैंने सब टाइमर देखिलो से क्वेश्चन देखिलो कौन $25 डॉलर डॉलर गोटे कंपनी अच्छी गंजी देवी तो देखो नेक्स्ट stop two identical conducting spheres one that has an initial charge plus q and other is initially uncharged initial charge plus q and other is uncharged are brought into contact other is uncharged means 0 coulomb अरे बुझला नहीं चला तो आपा a b then what is the new charge on each sphere bit a question new charge के देबो रे q plus 0 divided by 2 that is q by 2 so now charge on each zero charge के देला q by 2 and b charge will be plus q by 2 plus q by 2 ready next while the spheres are in contact
A positively charged rod is moved close to sphere, causing a redistribution of charges on the two spheres. So the charge on the sphere closest to the rod has a charge minus q. ना इंग्लिश बुझी पारछो? फुल स्टॉप नहीं कोडी कह नहीं कह डायग्राम केमती करवा जल्दी कह आए भाई तुम कही पारन टेंशन हो गल देख क्वेश्चन देला एठी एटा फर्स्ट बिट रो आंसर बाहरी गला करला नहीं सेकंड बिट कोन कहू सुनो एक बढ़िया क्वेश्चन डाटा सेकंड बिट कहला जति पढ़िबा तार अनुसार डायग्राम टा करला देख while the spheres are in contact बर्तमान स्फीयर कांटेक्ट रे आसले देखो while the spheres are in contact A B clear now a positively charged rod is moved close to sphere causing a redistribution of charges of the two spheres so the charge on the sphere closest to the rod has a charge minus q तामाने या पाखु बर्तमान आनली गोटे रड टे बर्तमान देखो पॉजिटिवली चार्ज रड आनली तो आनिबार कोन होला यार चार्ज केते गला माइनस q होला यार चार्ज केते गला माइनस q क्वेश्चन बजार जी व्हाट इज द चार्ज ऑन द अदर स्फीयर भाई यार चार्ज केते बचल आसीबनी total charge remains conserved no new charge is created in any process कहिथिल ना नहीं तो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम एट एनी मोमेंट देखो चेक करो व्हाट इज द टोटल चार्ज यस q तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम that is equal to q that is equal to q clear अरे क्लियर ना नहीं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ स्फीयर a प्लस चार्ज ऑफ स्फीयर b एतिक तो कथा तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ स्फीयर a प्लस चार्ज ऑफ स्फीयर b sphere so what is the charge on sphere b charge on sphere b equal to yes q total minus charge on so q total केते q minus what is charge on a minus q answer is 2q this is the answer done ठीक ना नहीं देखो कंडक्शन न्यूमेरिकल किसी ना ओनली खाली क्वेश्चन बुझार अच्छे अदर न्यूमेरिकल गुड़ा कैलकुलेशन दरकार भल से दबे कैलकुलेशन अच्छी करें ठीक ना नहीं कह एमती कूलम्स लॉ जो पढ़ाब ना गोटे क्लास पूरा पढ़ेब कूलम्स लॉ न्यूमेरिकल तो काइंडली जो न्यूमेरिकल कराब किसी तुम ये बोरिंग फेस माने फील कर आउ एमती फील करनी जे भावनी मु गोटे टाइप न्यूमेरिकल को 5टा क्वेश्चन करी एमती ना मुझे 5टा क्वेश्चन सॉल्व करी तारे 5 डिफरेंट टाइप कर दिया किंतु फॉर्मूला कौन पड़ो से कूलम्स लॉ सो दैट तुम क्वेश्चन अप्रोच कर पार डिफरेंट क्वेश्चन हाँ ना नहीं तो न्यूमेरिकल टा भल से अरे नहीं नेक्स्ट अच्छा सेम टाइप रो क्वेश्चन एटा करथिले कि देखलो कराई जी परहैप्स नो अरे लगी राजी है जी नहीं तो यही भले तो है सब क्वेश्चन पढ़ी बुझ कर केते आंसर आस कैश प्राइज नहीं एटा ओनली एप्रिसिएशन अछि बाबू कौन कहूच ठीक ठाक अच्छी हाँ ठीक अच्छे तो सब एवरीथिंग इज ओके कह टू आइडेंटिकल व्हाट इज देयर मींस सेम फॉर्मूला so two identical conducting spheres are charged by induction and then separated by a large distance sphere 1 has charge plus q sphere 2 has charge minus q sphere 1 has charge plus q sphere 2 has charge minus q a third sphere
is initially uncharged. 0. If the sphere 3 डोरी बोली आंसर देव आज कौन है जानते क्लास 10 रे है 6:30 रे क्लास टा भाई मु अच्छी मात्र 2 to 3 मिनिट्स जाइए 2 to 3 मिनिट्स जाइथिबो मु स्टार्ट करछि लिखिबा राइटिंग जने पिला वाशरूम जीवो झियोटे जनरली केम तमे वाशरूम कहबो सेही निजो बेंच रे ठियाई कहबो ना नहीं से पूरा आसी पूरा मोड लिखुछि ना नहीं एडी पूरा आसी सर मु कहली हेला कोन मोबाइल टेंशन पूरा 6:30 क्लास देह फेह खराब हेले मु टेंशन डाक टॉप फ्लोर सब अच्छु वाशरूम हला तीन डरे मु एब्सेंट माइंड हे गली पूरा हो देखो केते आंसर आसिला तमरो प्लस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 2 आ गोटे हाँ ठीक अच्छे देखिए देखो अप टू दिस इट इज क्लियर ए थर्ड स्फीयर इज इनिशियली अनचार्ज ठीक अच्छे देन इफ स्फीयर 3 इज इनिशियली टच टू स्फीयर 1 देखो स्फीयर 3 आ स्फीयर 1 को हमें कांटेक्ट बनिबा स्फीयर 1 स्फीयर 3 कते हबरी q + 0 बाई तो सेपरेट होला परे केते आंसर आसीबो एटा ला स्फीयर 1 दिस इज स्फीयर 3 2 के कहला तो आंसर केते आसिला वर्तमान फाइनल आंसर इज q बाई 2 केते बाला q बाई 2 q बाई 2 q बाई 2 प्लस q बाई 2 प्लस q बाई 2 रेडी वर्तमान बी सॉरी सेकंड स्फीयर सतो हमें किसी लेन देन नहीं जेमति थिला ठीक अछि तापर क्वेश्चन कहला ए पर्यंत क्लियर एंड देन सेपरेट कर देला हमें देन टच टू स्फीयर 2 किए टच हला रे sphere 3 is initially touched to sphere 1 then separated and then sphere 3 is touched with sphere 2 बुझ पाइलो तो sphere 3 कोडा नेक्स्ट डायग्राम दिस इज sphere 3 चार्ज केते q by 2 व्हाट इज sphere 2 चार्ज माइनस q बस तापर क्वेश्चन कोन कहै देन सेपरेट करो केते इज चार्ज होबो q by 2 minus q whole divided by 2 केते आंसर आछी q by 2 minus q that is minus q by 2 whole divided by 2 minus q by 4 so after separation this is your sphere 3 this is your sphere 2 the final charge is minus q by 4 minus q by bas so final charge on each of the sphere that is equal to answer correct अछि तारो ठीक कहै छियो final charge केते रे this is for sphere 3 then this is for sphere 2 and sphere 1 कोडे बोला एडा this is for sphere 1 these are the final answers बुझेला आयुष निज कंट्रोल अछि तो एडा बस फिनिश्ड लास्ट क्वेश्चन करिवा वेट पुणी कौन भूल हो गला कि नहीं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिवा देखो उफ जल्दी को सॉल्व करिया कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन ए 3.11 ग्राम कॉपर पेनी गिवन एवोगाड्रोस नंबर इज दिस मच ग्राम पर मोल फॉर कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29 एंड एटॉमिक मास इज 63.5 ग्राम क्लियर तो कौन करिया हमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भाई कूलम रे बाहर कर देछि तो q पचारछि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q हाउ कैन वी फाइंड q इज इक्वल टू ne by e value though we know the value of e that means we have to find n value जानी वाला तुम क्वेश्चन कौन पचार so first thing given mass and this is molar mass from this we can know the number of moles पाइबा number of moles so number of moles answer फटाफट सॉल्व करी कहबो number of moles formula given mass by
Even mass divided by molar mass. Even mass divided by molar mass. Tell. Even mass is 3. जो माने 11 पड़ियो छोटो बजे देगी 3.11 no 3.11 हाँ then 63.5 answer 0.04 number of moles पचार देखो in 1 mole how many number of atoms are there in 1 mole number of atoms is equal to 6.023 into 10 to the power 23 गोटे मोल रे एतिकिटा एटम अछि को एटम बे कॉपर एटम बुझ पारछ ना नहीं सो केते मोल 0.04 मोल्स तो 10 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.04 moles what will be the value 0.04 into 6 into 10 to the power 23 what is the answer 0.24 into 10 to the power 20 एटा कौन बाहरला टोटल नंबर ऑफ एटम्स कौन बाहरला एटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स यस गोटे एटम रे एटॉमिक नंबर केते 29 केतरा इलेक्ट्रॉन अछि 29 इलेक्ट्रॉन्स गोटे एटम रे 29 इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ एटम्स तो इन वन एटम 29 electrons are present which implies in number of atoms 0.24 into 10 to the power 23 atoms so total electrons is equal to how much 29 into 0.24 into 10 to the power 23 what is the value 6.96 10 to the power 23 এটা কোন বাড়লা कौन बाहर गली एटा नंबर टा तुम कौन बाहरला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से खुनटा लिखाई छी इन एतिक एटम्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेटर डिनोट करा होची n दिस इज इक्वल टू n पचार छी टोटल चार्ज केते तो 10 q टोटल इज इक्वल टू n into e n वैल्यू 6.96 into 10 to the power 23 into e value 1.6 10 to the power minus 19 yes the answer 11.1 3 10 to the power 4 बुझला नहीं बहादुर एगुड़ा करे नहीं 1 मोल एतिक एटम ठीक ना नहीं भाई नंबर ऑफ मोल सेति केते एटम बाहर गोटे एटम रे 29 इलेक्ट्रॉन्स कपर जगह से गोल्ड भी दे पारे 79 कही मु थोड़ी ना लिखी क्वेश्चन ना मु लिखी कथा बुझल ना ये केमती करा तो को फॉर्मूला आज क्वेश्चन कराला सब Q is equal to Ne and conduction process in between two identical spheres or two identical charge body मन रहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सदा कोड हो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल तो ये डायग्राम जानि पाइलो इंडक्शन प्रोसेस रो हैं सो नो नीड टू मेमोराइज ठीक है तो विजुअलाइज कर पाइबा हमें बुझेला नहीं बुझेला तो जति न्यूमेरिकल हला जाई प्रैक्टिस करो आ मु होमवर्क दे दउ तुम न्यूमेरिकल केतरा हला करथु एति देखो एटा कराई छी बस एटा हेची बस these two you have to solve these two underline नहीं next देखो नेक्स्ट क्लास कॉपी चेक हम कॉपी सब आनिक आसो ओके दीज आर योर HW कर पारिबो हला छोट छोट क्वेश्चन आमे सब लेंथी क्वेश्चन सरी गले हला सॉल्व करो ठीक लागला न्यूमेरिकल बुझेला तो प्रैक्टिस दरकार रेडी ओके थैंक यू।